This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कॉफी सिरप के बारे में बात की। इन्होंने हाउस को बताया कि केमिकल डाइथिलिन ग्लिकोल डीईजी से लदे और डिजिटल विजन के साथ तैयार करदा सिरप अवामी डेटा के जरिए जाहिर होने वाले मियार को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर्स गैर मयारी अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से बाज रहते हैं। उन्होंने ऐवान को ड्रग्स कंसिडरेशन कमेटी के बयान से आगाह किया कि नाक़िस अद्वियात के हर केस की कार्रवाई से मैन्युफैक्चरर्स को हिरासा किया जाएगा। जनाब अवैसी ने कहा कि इस बयान को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अच्छे तरीक़ों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से बच्चे खांसी का ये सिरप पी रहे हैं और मर रहे हैं और ऐसी गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। पेश है 18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। Sir, I want to bring to the notice of August House an important issue, sir, that many children have died by consuming the cough syrup called Govt, which contains a deadly chemical called diethylene glycol. Sir, a few years ago in Ramnagar village in Jammu, dozen children also died by consuming this diethylene glycol-laden tonic called Cold Best. Both these were manufactured by Digital Vision. Sir, publicly data shows that these medicines fail to qualify quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act 1940 which treats such serious offence. What I demand from the government, sir, is that the regulatory response to Digital Vision's offences weren't unique to the company, but were symptoms of a larger systemic problem. The Indian state and central drug regulators today balk at prosecuting manufacturers of substandard drugs. The Drug Consultative Committee and advisory body to state regulators have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drugs would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn, and strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act should be implemented. This is a very important issue, sir. Many children are drinking this cough syrup and they are dying, and there is no control by the government on such sale of substandard drugs, sir. Thank you, sir.